Hello friends, I am Sourav Somani from Guwahati, a chartered accountant by professional, and आज हम सीए संसार में डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 115 BAC of the Income Tax Act 1961. This section is a new section which has been introduced from assessment year 21-22, and इस साल जब इंडिविजुअल्स और एचयूएफ अपनी रिटर्न्स फाइल करेंगे फॉर द मार्च एंडिंग 2021, दैट इज असेसमेंट ईयर 21-22. So section 115 BAC is going to play a major role in determining the computation of total income and also the tax liability, and therefore due care and caution has to be taken while filing income tax returns. तो हम देखते हैं कि ये सेक्शन में क्या ऐसी खासियत है. Section 115 BAC is commonly known as new tax scheme. ये एक न्यू टैक्स स्कीम है. The new tax scheme is applicable from assessment year 21-22. This scheme is applicable only for individuals in HUF. यानी कि other entities like companies, partnership firm and LLPs will not be covered. Only individuals in HUF के लिए ही ये section है. And this section will play a very important role. Hence, returns need to be filed with care and caution. अब सेक्शन 115 BAC का एक जिस्ट मैं बता देता हूँ. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये न्यू टैक्स स्कीम है और न्यू टैक्स स्कीम इज ऑल अबाउट अ न्यू टैक्स स्लैब, द न्यू एलिजिबिलिटी कंडीशंस and some features and techniques that have to be employed while calculating your tax liability. So the question is the new tax scheme, is this section compulsory for individual and HUF? आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. The new tax scheme is optional and not mandatory. यानी कि जो न्यू टैक्स स्कीम है ये अभी तक ऑप्शनल है, ये कंपल्सरी नहीं है. The taxpayers, individual and HUF will have to decide whether to opt for the new tax scheme or continue with the existing provisions of the act. यानी कि इस बार जब रिटर्न्स फाइल करेंगे इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ के केस में, then before filing of returns, before the due date of filing of returns, the taxpayer will have to decide whether they will opt for the new tax scheme or will they continue with the existing provisions of the act. If any individual or HUF decide to opt for the new tax scheme, then such individual or HUF has to file Form 10IE for exercising the option under the new tax scheme. And if individual or HUF decides to continue with the existing provisions, then such form did not be filed. So new tax scheme में अगर कोई individual HUF opt करता है, then a new tax slab rate will apply. आइए देखते हैं ये new tax slab rate क्या है. Tax slab under new tax scheme versus tax slab under the existing provisions. जैसा कि आप देख रहे हैं इस टेबल में एक कंपैरिजन बना हुआ है, द टैक्स रेट्स अंडर द न्यू टैक्स स्कीम वर्सेस द टैक्स रेट अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. न्यू टैक्स स्कीम में जैसा कि आप देख सकते हैं कि टैक्स रेट्स अंडर द न्यू टैक्स स्कीम आर कंपैरेटिवली लोअर देन द टैक्स रेट्स अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस. न्यू टैक्स रेट्स आप जैसे देख रहे हैं 5%, 10%, 15%, 20, 25, 30. आफ्टर एवरी 2.5 लाख द टैक्स रेट इज इंक्रीजिंग बाय 5%. और एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में जैसा कि हम जानते हैं कि जो टैक्स रेट्स है वो 5%, 20% एंड 30% है. सो इफ यू लुक केयरफुली द टैक्स रेट्स इन द न्यू टैक्स स्कीम इज कंपैरेटिवली लोअर देन द टैक्स रेट्स अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस. Prima facie, it appears that if we go for the new tax scheme, the tax liability will get reduced. But ऐसा नहीं है. This is not so simple. The catch is there. Even if the tax rates are comparatively lower than the new in the new tax scheme than the old one, there are certain restrictions which have to be adhered to while computing your tax liability. आइए देखते हैं क्या है ये मेथड ऑफ कंप्यूटेशन अंडर द न्यू टैक्स स्कीम.
The total income will be calculated without taking into effect certain deductions, exemptions, allowances, and brought forward losses. यानी कि एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में इनकम टैक्स एक्ट में काफ़ी सारी डिडक्शंस थी, लाइक चैप्टर 6A डिडक्शंस की हम बात करते हैं, 80C टू 80U। सैलरी के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 है। हाउस प्रॉपर्टी के केस में इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इज अलाउड टू बी डिडक्टेड। If an individual is opting for the new tax scheme, many of such deductions, exemptions, and allowances will not be available. तो if you look carefully in the new tax scheme, एक तरफ तो इन्होंने tax rates काफी reduce कर दी है, but दूसरी तरफ deductions and allowances इन्होंने हटा दिए हैं। इसलिए while calculating your computation and tax liability, practically an individual or HUF need to calculate under both schemes, new tax scheme and the old one, and therefore decide accordingly which is more beneficial. तो आइए देखते हैं कि न्यू टैक्स स्कीम में क्या क्या डिडक्शंस है, एग्जम्पशंस है और अलाउंसेस है जो कि अभी अवेलेबल नहीं होगी। इन सैलरी, following deductions and allowances will not be allowed under the new tax scheme. लाइक जो पॉपुलर डिडक्शंस हम जानते हैं, अलाउंसेस हम जानते हैं, इन द स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000, प्रोफेशनल टैक्स एंड एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रेवल कंसेशन, माइनर चाइल्ड इनकम अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, सम स्पेशल अलाउंसेस लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, अलाउंस ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। ये सारी डिडक्शंस और अलाउंसेस न्यू टैक्स स्कीम में अवेलेबल नहीं होगी। However, following allowances under section 1014 can be claimed. ये कुछ स्पेशल अलाउंसेस हैं जो न्यू टैक्स स्कीम में अभी भी अवेलेबल होगी। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस इन केस ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, कन्वेंस अलाउंस रिसीव्ड टू मीट द कन्वेंस एक्सपेंडिचर incurred as a part of the employment, any compensation received to meet the cost of travel on tour or transfer, daily allowance received to meet the ordinary daily charges or expenditure which employees incur on account of absence from his or her regular place of duty. सो ये काफ़ी सारी अलाउंसेस है जो न्यू टैक्स स्कीम में अब अवेलेबल है, जो कि एग्जिस्टिंग स्कीम्स में भी थी। एंड अगर हम कुछ एग्जम्पशंस की बात करें, like interest income on PPF and interest income on Sukanya Samriddhi scheme, these interests are exempted in the existing provisions and they will continue to remain exempted in the new tax scheme also. Next slide बात करती है other source. Under the head other source, deduction from family pension income. Existing provisions में family pension income की ₹15,000 की एक blanket deduction मिलती थी। Now in the new tax scheme, such deduction from family pension income will not be allowed under the new tax scheme. Under the head business or profession, business और profession में काफ़ी इन्होंने changes किया है। Like if you are opting for the new tax scheme, then additional depreciation for new plant and machinery will not be allowed. Normal depreciation आपको मिलेगी, but additional depreciation will not be allowed. Now, in business, there are specified businesses like Section 32AD business, businesses of tea, coffee, and rubber plantations covered under Section 33AB, 33ABA, जो कि extraction or production of petroleum or natural gas है, and certain businesses engaged in scientific research, उनको Section 35 में डिडक्शन अलाउ होती थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 35AD, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35CCC फॉर एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट एंड दोज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स व्हिच आर कवर्ड इन सेक्शन 10AA। नाउ स्पेसिफाइड बिजनेस की काफ़ी सारी डिडक्शंस हैं जो कि एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में है, बट इफ an individual HUF opts for the new tax scheme, these deductions will not be available. ये blanket refusal इन्होंने कर दिया है new tax scheme में। So this I think in the new tax scheme many restrictions are there, and therefore before applying for the new tax scheme you have to see the provisions very carefully.
अब हम आगे चलते हैं डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। जैसा कि हमें पता है कि एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में 80C टू 80U की डिडक्शंस हमें मिलती थी। नाउ इन द न्यू टैक्स स्कीम सच ऑल द डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U विल नॉट बी अलाउड। हाउएवर सिर्फ दो डिडक्शन हैं जो कि अभी भी न्यू टैक्स स्कीम में अवेलेबल होगी, लाइक डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC2, which is contribution by employer under notified pension scheme on behalf of an employee, and deduction under section 80JJAA in respect of additional employment cost of new employees। ये दो डिडक्शन की जो सेक्शंस है 80CC2 and 80JJAA will continue in the new tax scheme also। Also, units covered under International Financial Service Center under Section 80LA subsection 1A will be eligible for deduction under 80LA in the new tax scheme। कहने का मतलब ये है कि ये कुछ दो तीन डिडक्शंस को छोड़ के बाकी सारी जो डिडक्शंस है 80C की, 80D की, 80E की, 80G की, 80U की, ये सब डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होगी if an individual or HUF opts for the new tax scheme। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ लॉसेस की। Now, in the new tax scheme, it is clearly given that brought forward losses and unabsorbed depreciation of earlier years to the extent they relate to the deductions, exemptions withdrawn under this new section 115 BAC। यानी कि ये 115 BAC is applicable from assessment year 21-22। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, if such losses or unabsorbed depreciation of earlier years, if they are related to the exemptions or deductions withdrawn under new section 115 BAC, then such losses or unabsorbed depreciation will not be allowed to be set off। यानी कि अगर हम पिछले स्लाइड्स में देखते हैं तो बिजनेस और प्रोफेशन के केस में एडिशनल डेप्रिसिएशन फॉर न्यू प्लांट एंड मशीनरी वाज विल नॉट बी अलाउड इन द न्यू टैक्स स्कीम। अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, then such unabsorbed depreciation will not be allowed in the new tax scheme। सिमिलरली जो स्पेसिफाइड बिजनेस के बारे में हमने पढ़ा था सेक्शन 33AB, 33ABA, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35, कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 35AD, अगर इन सब सेक्शंस में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस पहले थे अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस, and if you go for the new tax scheme, then such brought forward losses will not be allowed to be set off in the new tax scheme। तो ये काफी मेजर डिस्टिंक्शन है। And any unabsorbed depreciation relating to additional depreciation will be adjusted from the opening WDV of the block of assets as on 1st April 2021, and unabsorbed depreciation जो कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है will be allowed to be set off। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉसेस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में हम ये देख रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑन सच प्रॉपर्टी, लाइक अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है देन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अगेंस्ट सच सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी वाज अलाउड इन द existing scheme up to the extent of rupees 2 lakhs subject to some conditions। new tax scheme में क्या है, interest on such self occupied housing property will not be allowed under the new tax scheme। so this is a huge departure from the existing provisions। let out property की बात करें then standard deduction of 30% and deduction of municipal taxes will be allowed under the new tax scheme। however interest on housing loan will be allowed only to the extent of income under this head। यानी कि एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में हम क्या देख रहे थे कि अगर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है देन इंटरेस्ट ऑन सच ऑन हाउसिंग लोन अगेंस्ट सच लेट आउट प्रॉपर्टी if
any loss under the house property was there, then such loss was allowed to be set off from other heads of income also. In the new tax scheme, such house property loss will not be allowed to be set off against other heads of income. क्लैरिटी के लिए हम एक स्लाइड देखते हैं जिसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं. Like this is an example of treatment of losses under house property under new tax scheme. इस एग्जांपल में जो इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है उन्होंने न्यू टैक्स स्कीम ऑप्ट कर रखी है ऐसा हम अज्यूम करते हैं. तो देखिए इनकी हाउस वन हाउस टू की इनकम है. रेंटल इनकम आप देख सकते हैं 2,40,000 एंड 90,000. स्टैंडर्ड डिडक्शंस दी हुई है एंड इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अगेंस्ट हाउस वन है और हाउस टू नील है. तो आप देख सकते हैं लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इज ₹7,000 and income from the house property 2 is 63,000. Now इस केस में in the new tax scheme this house property loss of ₹7,000 will be allowed to be set off against 63,000. यानी कि सेम हेड एडजस्टमेंट हो सकता है. अगर इसी क्वेश्चन में सपोज अगर हाउस 2 नहीं होता तो हाउस 1 का जो लॉस है ₹7,000 that will not be allowed to be set off against other heads of income. अगर other heads of income business income है सैलरी है तो उस head of income में ये 7,000 एडजस्ट नहीं होगा. The most important catch is that such house property loss will also not to be allowed to be carried forward in the new tax scheme. अगर इस साल अगर एडजस्ट नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर भी ये लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा. सो दिस इज ए ह्यूज रेस्ट्रिक्शन इन द न्यू टैक्स स्कीम एंड माय ओपिनियन इज दैट दिस विल डिस्करेज द टैक्स पेयर्स फ्रॉम ऑप्टिंग अंडर द न्यू टैक्स स्कीम. सो आई होप दैट वी एक्सपेक्ट दैट द सीवीडीटी विल कम विद बेटर क्लैरिफिकेशन एंड रिलैक्सेशन इन दिस रिगार्ड. अब हम चलते हैं कंडीशंस फॉर एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर न्यू टैक्स स्कीम. नाउ कुछ कंडीशंस है फॉर ऑप्टिंग अंडर द न्यू टैक्स स्कीम. लाइक इफ द टैक्स पेयर इज हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, the taxpayer can opt for taxation under the new scheme either in assessment year 21-22 or in any subsequent year. If the option is exercised, the new scheme will applicable for subsequent years also. After the option is exercised, the taxpayer can withdraw from this scheme only once in a subsequent year. आइए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि ये सेक्शन क्या कहना चाह रहा है. एक टेबल में एग्जांपल बना है. नेचर ऑफ इनकम इज बिजनेस और प्रोफेशन. द टैक्स पेयर इज हैविंग बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम. Now, assessment year 21-22, it is the first year of section 115 BAC. The status is the taxpayer has not exercised section 115 BAC. That is, he has not opted for the new tax scheme, and therefore the normal provisions will be applicable. In the next year, assessment year 22-23, the taxpayer has opted for the new tax scheme, okay, by filing Form 10IE. Now, in the third year, assessment year 23-24 and 24-25, the new tax scheme will be applicable by default, because अगर आपने एक बार new tax scheme apply कर ली, then every year the new tax scheme will be applicable. Assessment year 2025-26, fifth year में देखिए. Now, for some reason, the taxpayer decides to withdraw from this option. तो इस सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि the business or professional taxpayer, after they have opted the new tax scheme, they can withdraw from this scheme only once. So opt out का option only once है. So for some reason in this example, taxpayer withdraws from this option. So once he withdraws from the option, then the normal provisions will be applicable for this assessment year and subsequent years as well. Catch ये है कि अगर एक बार taxpayer withdraw कर लेता है, if the taxpayer opts out of the new tax scheme, then such taxpayer will not be allowed to opt for the new tax scheme again.
So before opting out of the new tax scheme, due care and caution has to be exercised. For taxpayers who do not have business income or professional income, जैसे कि taxpayers having income from salary or other sources or house property income, इन taxpayers की अगर income business और profession में नहीं है, then in this case the taxpayer can decide to opt in or opt out every year without any restriction. इनके लिए कोई restriction नहीं है, every year they can either opt in or opt out as per their own convenience. अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन रेज होता है, whether the employee need to inform the employer regarding exercising of this new option. Like assessment year 21-22 में ये स्कीम applicable applicable हो गई है, तो एम्प्लॉइज जब एम्प्लॉइज को अपनी एक एक्सपेक्टेड एक एस्टिमेटेड इनकम की शीट एम्प्लॉयर को देनी पड़ती है, so that the employer can deduct TDS. So in that case, whether the employee need to inform to the employer that whether he or she is opting for the new tax scheme or going for the existing provisions. तो CBDT की ये क्लैरिफिकेशन है, इसमें आइए देखते क्या लिखा है. एम्प्लॉइज हैविंग नो बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, सिंपल, जो the employee taxpayer has to inform and intimate the employer whether or not the option of new tax regime will be exercised. If the employee does not inform, the employer will deduct TDS on employee's income computed under the normal provisions of the Income Tax Act. The intimation to the employer about the exercise of this new option is not equivalent to the exercise of the option under the new tax scheme. In other words, irrespective of the intimation, the employee taxpayer can exercise the option at the time of filing of return, which will be considered final. यानी कि for the purpose of TDS, अगर employee अगर intimate कर देता है कि मैं न्यू टैक्स स्कीम अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा, उस डिसीजन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर विल डिडक्ट द TDS. But the option to exercise such scheme will be done before filing of income tax return. So even if the employees, even if the TDS has been deducted under the new tax scheme, the employee still go for the existing provisions, and vice versa is also applicable. Like if the TDS has been deducted under the normal provisions, the employee can still go for the new tax scheme. Employees having business or professional income. Now, if the employees are having business or professional income, and such employees need not inform or intimate the employer regarding the exercise of option at the time of deduction of TDS. The employer will deduct TDS under the normal provisions of the Income Tax Act. Once such employee has exercised the option under Section 115 BAC at the time of filing of income tax return, the employee will have to intimate and inform the employer about the same. The employer accordingly will deduct TDS under the new tax scheme for the subsequent assessment years. So Section 115 BAC talks about the new tax scheme. अगर हम जिस्ट में बात करें, the new tax scheme is going to be applicable from assessment year 21-22. This tax scheme is applicable only for individuals and HUF. A new tax slab rate is given in the new tax scheme, which is comparatively lower than the old provisions. Before filing of returns, before the due date of filing of income tax returns, individual and HUF will have to decide whether they want to opt for the new tax scheme or will they continue with the existing provisions. If they want to opt for the new tax scheme, they have to file a return form 10IE online. And because this is the first year of applicability of Section 115 BAC, due care and caution has to be exercised. So practically an individual or HUF will have to prepare computation under both methods, new tax scheme and the existing provisions,
और ये देखना पड़ेगा कि कौन सा बेनिफिशियल है इन द लॉन्ग रन, and decision has to be made accordingly. I hope you have found this video informative and practical. That is for now. Thank you. Stay safe. Stay fit. Thank you.